Hello students, I'm back again with my lecture 2 on the topic as I told you, that is human capital formation. Those students who have not seen lecture 1 kindly see lecture 1, then only आप lecture 2 से relate कर पाओगे, तो ही जाके आप lecture 2 समझ पाओगे related to your Indian economic development. Okay, if you have any doubts you can DM me on Instagram, Facebook, and I have also given in description box my Telegram channel link, so you can go and follow the Telegram channel link. Before starting, just subscribe my channel and just share the videos with your friends so that you can get more updates on eco, accountancy, and business studies. Recently, I'm posting economics lectures only students. Economics lectures आपके micro भी complete हो चुके हैं, statistics complete हो चुका है, macro, and now I'm focusing on Indian economic development. Indian economic development के 4 chapters post हो चुके हैं, and this is my 5th chapter going on related to human capital formation. So let us start with the today's session. Now students, see, in the previous lecture हमने sources समझ लिए थे. Now let us understand what is the importance of human capital formation. बस आज का यही एक topic major है जो मुझे cover करना है. Here I have given a short form, that is right top. Okay, R is for rural development, E is for economic growth, D is for development of national wealth, T is for technological improvement, O is for opportunity for women participation, P is for physical capital. So in today's session, I will be only explaining about the importance of your human capital formation. कि आपकी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या इंपॉर्टेंस है वही अपन समझेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट. व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट? अभी अपन ने प्रीवियस चैप्टर में खत्म करा है दैट रूरल डेवलपमेंट इज व्हाट. रूरल डेवलपमेंट मींस डेवलपिंग द रूरल एरियाज, वहाँ के ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना. अब वो डेवलप करने के लिए आई नीड व्हाट, आई नीड टू सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, दैट आर द मेजर health and education. So education can contribute significantly in the rural areas. अगर आपको डेवलप करना है रूरल एरियाज को, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है कि आप वहाँ के पर्सन्स को एजुकेट करें. एजुकेशन इज द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. एज आई टोल्ड यू, ये पहला सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, इट्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स. सेकेंड, इसका बेनिफिट क्या होगा? सपोज टेक फॉर द एग्जांपल, योर फार्मर इज मोर एजुकेटेड, नाउ ही विल अडॉप्ट न्यू टेक्निक्स, न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन. उसे पता होगा मिक्स क्रॉपिंग क्या होगा, उसे पता होगा कि HYV सीड्स का कब यूज करना है, उसे पता होगा फर्टिलाइजर्स कब यूज करने हैं. सो दैट पर्टिकुलर फार्मर विच इज मोर एजुकेटेड, more qualified, he will be utilizing those products and services in a better manner as compared to an uneducated farmer. It will help the rural people to get more skills, even to set up a cottage industry. जो small scale industries हैं उसको set up करने के लिए भी helpful होगा. A educated person can easily get a loan under various scheme of Startup India, Make in India. Okay, so here it will also help in the income. आपकी जो income है वो increase हो जाएगी if a educated person is there. Okay, difference comes, see, if you are investing in education, आपके पास new technology की knowledge आएगी उस particular person के पास. Secondly, he or she will be able to know the new techniques of production, और अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट जीडीपी पे आएगा. जीडीपी आपकी कंट्री की क्या होगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज कि इससे रूरल एरियाज डेवलप होना शुरू हो जाएंगे. सेकेंड इज इकोनॉमिक ग्रोथ, मोर प्रोडक्टिव लेबर फोर्स हो जाएगी. सी, अब प्रोडक्टिव लेबर फोर्स और अनप्रोडक्टिव लेबर फोर्स में क्या डिफरेंस है? प्रोडक्टिव लेबर फोर्स इज एजुकेटेड एंड हेल्दी. Unproductive labor force, yeah, तो particularly it is unhealthy, they will not be able to help in generation of GDP, or they are uneducated, means they are not having such skills, not having such knowledge. So in that case हमारा यहाँ पे focus ही रहेगा कि if you are going to increase your economic growth तभी increase होगी. It will increase only when your particular human resource is converted into a human capital, and for the same I need the sources of human capital formation to be invested. अब इसके benefit क्या है?
फर्स्ट बेनिफिट है widespread employment and income earning opportunities. It is giving a very widespread employment opportunities. किसको दे रहा है? It is giving opportunities to rural areas also. कैसे? टेक फॉर द एग्जांपल, आपने इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो प्रोडक्टिव लेबर फोर्स है वहां पे किसी सपोज एमजी नरेगा के अंदर और किसी पर्टिकुलरली गवर्नमेंट स्कीम के अंदर उनको एम्प्लॉयमेंट दिलवा दी. सो इससे दो चीजें, फर्स्ट इट विल हेल्प इन देयर इनकम अर्निंग, सेकेंड इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, सेकेंड इज इम्प्रूविंग योर मॉडर्न आउटलुक इन डाइवर्स सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन. ओके, आप समझिए, व्हेन यू आर गोइंग फॉरवर्ड द इकोनॉमिक ग्रोथ, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है. बिफोर यू आर यूजिंग पर्टिकुलरली सम अदर प्रोडक्ट्स, नाउ यू विल बी यूजिंग some other products which will increase your lifestyle, and ultimately it will be focusing on the economic growth. क्योंकि अगर इनकम स्टेटस बढ़ रहे हैं, सिंपल, अगर आपका इनकम स्टेटस बढ़ रहा है सो अल्टीमेटली लाइफस्टाइल भी बदलेंगी, एंड सेकेंड इट विल आल्सो हेल्प इन इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटीज आल्सो. नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ नेशंस वेल्थ. अब हेल्थ पे अगर आपको खर्चा कर रहा है सो अल्टीमेटली वो नेशंस की वेल्थ पे बेनिफिट करेगा. बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग हेल्थ फॉर द प्रोडक्टिव लेबर फोर्स. सी, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. अगर आपने इन्वेस्ट करा है, हेल्थ इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ योर कैपिटल फॉर्मेशन. तो अगर यूर इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन हेल्थ, ultimately it is helping and in maintaining what, a healthy and a productive labor force. Second, it improves the lives of people and the quality of society. A healthy person, okay, is particularly more productive than an unhealthy person. That is the major concept. So expenditure on this particularly will help you to develop your nation's wealth. Automatically your youth will be healthy, your youth will be more productive as compared to the other countries if they are not investing in health infrastructure. Next is technological improvement, inventions and innovation. See, अगर आपने पर्टिकुलर पर्सन्स को माइग्रेशन में इन्वेस्ट करा है, आपने ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए इन्वेस्ट किया है, सो वो जब वहां जाएंगे, पर्टिकुलरली दे विल बी गेटिंग ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, पर्टिकुलरली दे आर गोइंग टू सम अनदर कंट्री टू गेट द ट्रेनिंग. सो हो सकता है वहां से इंस्पायर होकर यहाँ पे कुछ नया लेकर आए. So human capital formation inspires innovations and creates ability to absorb new technologies. When you are going from one particular country to another particular country, जब change होता है, so you will be able to see that another country में कौन सी new technologies आ रही हैं. So can I implement that technologies in India? Okay, education provides knowledge to understand the change in society. एजुकेशन क्या प्रोवाइड कर रही है? एक नॉलेज प्रोवाइड कर रही है दैट वी नीड टू हैव अ चेंज इन सोसाइटी. यू कैन सी दिस पेंडेमिक सिचुएशन. किसने सोचा था कि हम घर बैठ के ऑनलाइन एजुकेशन देंगे? nobody have ever thought that 11th 12th classes भी online situation में जाएंगी. But as we say that resources are there, so it should have been utilized way before. We are utilizing that resources now only because of this pandemic. So in this case, अगर technology है, improvement है, innovations है, so you should be utilizing that technology, improvement and innovation well before when they were introduced. Zoom पहले भी था pandemic situation के पहले, but उसका utilization कब बढ़ा? During the time of pandemic, during the time of this coronavirus situation. So in that case, we are using our technological improvements, inventions and innovations. And उसका effect क्या है? We are able to adapt to new technology. First and foremost, we are going to adapt the new technology and it will be focusing. इसको देख के और भी particular persons आएंगे जो और नई टेक्नोलॉजीज लेकर आएंगे. पहले से भी Zoom ही सुना था. Now we have n numbers of particular these apps which are coming for an online meet. There is Google Classroom, there is Google Meet, there is particularly now Microsoft Teams. So many other particular innovation also come when you see that situation can be turned into a business opportunity. As I told in E-Shape also, कि एक situation से ही business opportunity generate होती है. Next is opportunity for women participation. See, women participation is increased only when female literacy rate increases. अगर female literacy rate increase ही नहीं होगा, you are not entertaining more women's, then how can I will be giving an opportunity to a woman if she is not educated? Okay, so female literacy अगर increase होगी, it will be giving more opportunities to women to enter into the workforce. इससे first benefit होगा, educated women can raise their voice.
Second, woman empowerment in the family decision also increases. That is the major aspect. So यहाँ first and foremost, if you are investing in human capital, human resource तो women भी है. So if I'm investing on human resource, on particularly on women also, on females also, so my literacy rate will increase, and female literacy rate as soon as increases, it will be helpful for overall nation. Okay, educated movements are raising their voice towards the particular things which are not being faced by women. So, पहला benefit ये कि educated women can raise the voice. Second, it is helping those women to take their decision in the family matters also, because she is also a earning member. पहले सिर्फ मेल अर्निंग मेंबर होता था तो उसकी चलती थी, लेकिन अब की सोसाइटी में व्हेन मैन एंड वुमेन बोथ आर अर्निंग, so both are there to take the decisions equally. Okay, no one person will take the decision, there are both, particularly men and women, who will be taking the decisions accordingly. So in this case यहाँ पे women empowerment has been increased, family decision में उनका impact बढ़ गया है, and that is the major. Next, physical capital. Okay, technical, professional, and administrative peoples are required to make effective use of material resources. एक बात समझो, मैं आज सपोज एक कंट्री से मशीन लेकर आया. Now I'm not knowing how to utilize that machine, because उसको यूटिलाइज करने के लिए कुछ स्किल्स चाहिए, कुछ नॉलेज चाहिए, उसे स्टार्ट कैसे करना है, उसे शट डाउन कैसे करना है, दैट इज ऑल बीइंग रिक्वायर्ड अ ट्रेनिंग. अब उसकी ट्रेनिंग ही नहीं है तो हाउ कैन दैट पर्सन यूटिलाइज दैट मशीन? तो वो पूरा इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? जीरो. सपोज गवर्नमेंट ने जी तोड़ मेहनत करके वो फिजिकल कैपिटल आपके यहाँ पे लेके भी आ गए, पर उस फिजिकल कैपिटल को चलाएगा कौन, उस मशीन को चलाएगा कौन? until and unless my human resource know how to start that machine, how to run that machine, how to use that machine, how to shut down that machine. So फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे हो, ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे फिजिकल कैपिटल की ग्रोथ भी होगी, बिकॉज न्यू टेक्नोलॉजीज विल कम, और यही न्यू टेक्नोलॉजीज कौन यूज करेंगे? आपके ह्यूमन रिसोर्स. बेनिफिट क्या है? फिजिकल कैपिटल विल बी एक्सप्लॉइटेड फुल्ली एंड इन अ मोर एफिशिएंट वे बाय अ एजुकेटेड पर्सन. एक एजुकेटेड पर्सन को पता है कि उस मशीन में क्या क्या पर्टिकुलरली harms आ सकते हैं, what can be the default. Take for the example, there are many engineers associated, so they will know that इस machine का outlook क्या आएगा, इस machine का output क्या आ सकता है, everything. So in that case, if you're investing in those particular resources, so they will be helping in development of your physical capital also. चलिए, thank you students for listening today's lecture on the Indian economic development, that was of human capital formation. This was lecture 2 for the particular topic. Do subscribe my channel for getting more updates on economics, accounts, and PhD. As I told you, now I'm posting only economics lectures. PhD and accountancy lectures will be posted soon. If you have any doubts or you need any online classes reference, you can just DM me on Instagram, or you can message me on Facebook. I even take the online classes in the evening. Thank you students for listening today's lecture.